spring of semi elliptical type has leaves of 75 millimeter width and 10 millimeter thickness and effective length and effective length of 900 millimeters. If the stress not to exceed, if the stress not to exceed 220725 kilopascal when spring is loaded to when spring is loaded to 4905 Newton, comma, estimate the required number of leaves, estimate the required estimate the required number of leaves and the deflection under this condition, and the deflection under this condition. If spring is just flat, if the spring is just flat under load, what is the initial radius? What is the initial radius? What is the initial radius? Take E equals to 196.2 into 10 raised to power 6 kilopascal. So please read the problem carefully. So it is basically the leaf spring which is loaded completely, and he is asking us to estimate the number of leaves, and that is a semi-elliptical leaf spring. So what are the equations which we need to use? One, the first equation is F is equal to 3 times PL divided by 2B T square N. Is that correct? Here he has used 3PL N T cubes. Can we use this equation?
See, I I do not have the calculator for this particular problem. That means I don't have direct return solution for this. So please help me in evaluating the solution. This is the expression which we have written for the leaf spring, yes or no, from previous class. Please reply yes or no. Okay. So now he has given as F is given as the stress not to exceed 2,725 into 10 raised to power 3, that has to be equal to 3 into what is P? P is given as 4905 into the length, the effective length is given as 900 millimeters, so 0.92. Width is given as 75 millimeter, so 75 into 10 raised to power minus 3 into thickness is given as 10, so 10 into 10 raised to power minus 3 whole square multiplied by n. So from here, please find out what is the value of n, because I do not have the value. I do not have the value of n. Sir, should t cube just a minute. Yeah, it has to be basically t cube. What is the expression I have written? Atharva sir, should it be 3 cube? Actually, it has to be 3 cube. F 3 omega. Whether it is coming dimensionally homogeneous or not, Sir, it should be t square only. it should be T square only. I wrote incorrect last time. okay. No, because there is some confusion here. In other equation, it is t cube. So I'm just looking at that equation because the equation is not in front of me. So that is why. Okay. So please get the value of t square. Please get the value of n. From here, what should be the value of n? Please calculate. I do not have the value. I have to depend on you. This comes out to be 4. Okay. N comes out to be 4. See, I go by the value which you people have given. That is correct. So N comes out to be 4. Now, what is the expression for delta? For delta, we use F L square divided by 4 modulus of elasticity into thickness T. Okay. So F is given as 2,20725 into 10 raised to power 3 किलो पास्कल में दिया है, तो ये 10 raised to power 3 हो गया. L जो दिया हुआ है L स्क्वायर, तो 0.9 का हो गया स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय E 196.2 10 raised to power 6 into 10 raised to power 3, ये हो गया पास्कल में. इनटू थिकनेस, थिकनेस कितना दिया हुआ है the thickness is given as 10 into 10 raised to power minus 3. So from here get the value of delta. Please let me know what is going to be the value of delta. Okay, so 20, sorry, this is 0.0278 meters. That means it is 22.78 millimeters. Am I correct?
सर ये सही है क्या? 22.7 millimeters. Okay. Now then radius of curvature हमने r का वैल्यू लिया था, r is equals to L square divided by 8z plus z by 2. So this comes out to be as z is equals to delta. So from here L square divided by 8 of delta plus delta by 2. So ये L दिया हुआ है 0.9 का स्क्वायर हो गया, ये डिवाइडेड बाय 8 इंटू डेल्टा दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट किया 0.02278, ये मीटर्स में ही रखा है, प्लस डेल्टा इज 0.02278 डिवाइडेड बाय 2. So what is the value of R? 4.456. चलो 4.456 meters, that is the value of R. So this is how you can calculate the parameters which are required for the, you can say, spring. Shall we solve one more problem on similar kind of thing, on similar lines? सर दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सर सब कुछ समझ में आया क्या? सीधा सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे वैल्यू रखिए एंड यू गेट द आंसर फॉर दैट. Shall we go to next problem? Anybody is having any difficulty in solving this? Okay, clear. चलो नाउ ये दूसरा प्रॉब्लम हम लोग खुद होके सॉल्व करके देखेंगे कि कैन वी सॉल्व अ फ्लैट स्प्रिंग. Flat spring 150 centimeter, 15 centimeter long, shows a deflection of 10 centimeters under a load of 4,000 Newton. It consists of 10 leaves 6 centimeters wide, two of which extend the full length, extends the full length of the spring. The leaves are held together. The leaves are held together at the center by a band, 10 centimeter wide, full stop. Calculate the thickness, of the leaves and maximum stress induced.
take modulus of elasticity E is equals to 0.26 into 10 raised to power 6 Newton per centimeter square. Please pay attention to this particular unit. So shall I shift to the next page? सर नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करें क्या? ओके चलो, तो सर ये प्रॉब्लम आप समझ लीजिएगा। अभी उसने क्या बोला है कि हमको what we need to held together by a band, calculate the thickness of the leaves. So solution में उसने क्या पूछा है कि thickness T कितना है of the leaves and maximum stress induced, that means F max पूछा है कि कितना है। उसमें क्या दिया है? See, please note that here why this problem is typical. Please note that due to stiffening effect, due to stiffening effect of the band, the equivalent length, सर equivalent length जो है वही calculation के लिए यूज होती है, so that is why you need to subtract the width of the band from the total length of the leaves. So it is 150 minus 10, that is equal to 140 centimeters, and use this particular length for all the calculations. So this is basically I wanted you to understand, because what is going to happen, suppose let us say that this is the spring, then all the leaves they are held together by this particular band. Okay, so let us say that this length is given as 150 millimeter and this length is given as 10, what he is given, 10 centimeters. Okay, not a millimeter, a centimeter ही दिया है, ये भी सेंटीमीटर में है, so ये भी सेंटीमीटर में है, so effective length is 150 minus 10, so that comes out to be 140 centimeters. So please be careful about this. Now what are the equations which we need to use? What he is asking us, thickness T, so thickness T और delta दिया हुआ है क्या उसने, the maximum it consider 10 leaves wide, 2 extra full length, the leaves are held together and calculate the thickness and leaves, show the deflection. Okay, so he has given us the deflection delta is given as a 10 centimeter, so 10 centimeter, and the load P is given as a 4000 Newton. Okay, and he is saying that consists of 10 leaves, so N is equals to 10 leaves, 6 meter wide, so B is equals to 6 centimeter wide, and 2 of which, so full length leaves, so NF कर देते इसको दिया हुआ है आपको 2 दिया हुआ है, extend the full length of the spring, the leaves are held together वगैरह वगैरह, बाकी का सब कुछ दिया हुआ है। तो सर हमको जो इक्वेशन यूज करना है सर, इसमें हमको जो इट इज number of full length leaves are more than 1. Sir, so we cannot use the previous equation directly.
So what we have to use, the equations which we need to use is delta is equals to 3pl cube divided by 4 in bracket 2 plus r bracket complete e n b t cube. So what is r here? R is equal to number of extra full length leaves. So number of extra full length leaves divided by total number of leaves divided by total number of leaves. तो सर अभी फुल लेंथ लीव्स एक्स्ट्रा कितना है सर? एक्स्ट्रा 1 है. टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं? 10 है. So this comes out to be 0.1. So is this clear sir? ये R 0.5 सर 0.5 नहीं होगा सौरभ. It is saying that number of extra means by default the spring will have one full length leaf by default. So apart from more than one, how many are there? Which it says that 2 of which extend extend the full length leaves of the spring. So that is why it will not be 0.5. What you have written sir? 0.5 नहीं होगा sir, 0.1 होगा. Is this clear Saurabh? Okay. So now put the value in the equation. तो सर डेल्टा दिया हुआ है तो हम लोग अभी टी क्यूब के इसमें लिखेंगे सर. सो टी क्यूब इज इक्वल टू 3 जैसे कि वैसा पी आपको दिया हुआ है 4000 1 2 3 4000. एल दिया हुआ है, ये इफेक्टिव अपने को यूज करना है सर. तो हम लोग अभी सेंटीमीटर में यूज करेंगे क्या इसको? चलो सेंटीमीटर में वैल्यू रख देते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर. सो न्यूटन पर सेंटीमीटर. आपका ई का वैल्यू जो है वो भी शायद सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है बिकॉज मैंने आपको बोला था कि यहाँ ध्यान रखो करके. इट इज 0.21 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये भी वैल्यू उसमें दिया हुआ है सर. तो हम लोग सेंटीमीटर में ही सब वैल्यू रखेंगे. तो दिस इज 140 इसका क्यूब हो गया, ये 4 हो गया इंटू 2 प्लस 0.1. ई का वैल्यू दिया हुआ है आपको, ई का वैल्यू दिया हुआ है 0.21 इंटू 10⁻⁶. ठीक है. ई एन 10 दिया हुआ है. विड्थ कितनी दी हुई है? बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. और डेल्टा कितना दिया हुआ है? डेल्टा भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसको भी 10 सेंटीमीटर रखेंगे. तो सर इसका वैल्यू मुझे बताओ सर, टी क्यूब का वैल्यू कितना आता है? प्लीज कैलकुलेट एंड प्लीज लेट मी नो. सर मेरे पास नहीं है इसके, सिर्फ ये लिखे हुए हैं प्रॉब्लम्स. सर टी क्यूब का वैल्यू कृपा करके बताइए. अथर्व, सौरभ और जो भी बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं सर प्लीज चैट बॉक्स में इसका वैल्यू डाल दीजिए, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. (31.11) I do not know whether this value is correct or not. 31.11. So सर t का वैल्यू कितना आता है? So t का वैल्यू आता है 3.14. Okay, so I will go by this. This seems to be perfectly all right. 3.14. अच्छा क्यूब रूट. ओके ठीक है. 14 ये सेंटीमीटर हो गया सर. फिर भी ये वैल्यू मुझे थोड़ी सी ज्यादा लगती है. 3.14 seems to be this value is more because 3 यानी काफी मोटा हो गया वो स्प्रिंग. चलो ठीक है जाने दो, ये तो इसके कैलकुलेशन के हिसाब से.
नाउ व्हाट एल्स इज आस्किंग, चलो ये थिकनेस तो निकल गया। अभी एफ मैक्स के लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? दिस डेल्टा इज इक्वल टू L square F divided by 2 into 2 plus R bracket complete E into T. Am I correct? सर ये इक्वेशन लिखने में कुछ गड़बड़ी नहीं है, ठीक है? तो ये इक्वेशन है, तो इसको अभी हम लोग F के टर्म्स में लिखेंगे। सो F इज इक्वल टू, तो ये हो गया 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस R E T delta divided by L square. So from here F comes out to be, चलो इसका वैल्यू रखो 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 0.1, E का वैल्यू उसने सेंटीमीटर में दिया हुआ है 0.21 इंटू 10⁻⁶। अभी थिकनेस का वैल्यू हमने निकाला है 3.14 और डेल्टा का वैल्यू उसने दिया है 10 सेंटीमीटर, इफेक्टिव लेंथ है 140 का स्क्वायर। तो सर ये इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि कितना आता है। तो वन फोर वन थ्री, so 1413 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है ना सर ये वैल्यू? सो दिस इज द वैल्यू which is coming for the maximum shear stress. So this is how you can solve the problem. There are some more problems which are related to this. तो सर समझ में आया क्या? ये आपको दोनों चीजें समझ में आई? So shall we move ahead? इसके बाद में भी कुछ एक दो प्रॉब्लम टिपिकल टाइप के हैं कि इतना इतना वेट दिया है, व्हीकल के फ्रंट पे इतना है, रियर पे इतना है, तो क्या होगा। तो हम लोग वो भी दिन बाद में कॉइल स्प्रिंग के भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज एक कॉइल स्प्रिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते क्या? चलो सर अभी तीसरा प्रॉब्लम करते कॉइल स्प्रिंग के ऊपर। तो सर जस्ट मैं आई एम चेंजिंग द शीट टू द न्यू वन, तो थोड़ा सा सर पेशेंस रखना। Only one problem we are going to solve on the coil spring. So next one, because ये problem just this is going to give you an idea that what kind of design issues can be there in the designing of the suspension system. Please understand that here the major issue is how to get the value of the load. लोड का वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलो अभी कॉइल स्प्रिंग का प्रॉब्लम करते हैं। अ टिपिकल कॉइल सस्पेंशन स्प्रिंग्स, typical coil suspension spring has 10 effective coils of a mean dia 125 millimeter, full stop, and made out of wires of dia, made out of wire of dia 15 मिलीमीटर, यानी 15 मिलीमीटर के वायर के डायमीटर से बना हुआ है वो स्प्रिंग। द स्प्रिंग इज डिजाइंड टू कैरी द
spring is designed to carry a maximum static load of 3531.6 newtons. Calculate shear stress. Calculate shear stress and deflection under the above loading. Under the above loading. If a maximum shear stress, if a maximum shear stress of 637,650 kilopascal is allowable in the material, then what is the possible clearance? What is the possible clearance in the spring? Take modulus of rigidity is G 73575 into 10 raised to power 3 kilopascal. So सर अभी हमको इसमें जो है तो क्या क्या कैलकुलेट करना है, देखिए वो बोलता है टिपिकल कॉइल सस्पेंशन स्प्रिंग हैज 10 एक्टिव कॉइल्स. सो एक्टिव कॉइल्स, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स अगर हमने देखा तो n इज इक्वल्स टू, उसने 10 दिया हुआ है नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, एंड हैज अ इफेक्टिव कॉइल ऑफ मीन डायमीटर, यानी जो कैपिटल D दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 125 मिलीमीटर और स्मॉल d दिया हुआ है 15 millimeter. Okay, the spring is designed to carry a maximum static load of, so P is equal to 3531.6 Newton. ये दिया. Calculate the shear stress. That means वो अभी आपको पूछ रहा कि Fs कितना है above the loading. If the maximum shear stress, यानी उसने F max अगर उसने दिया है, Fs maximum अगर उसने दिया हुआ है तो 637,650 kilopascal is allowable in the material, then the possible clearance in the spring. तो यानी आपको क्या करना है सर, पॉसिबल क्लियरेंस के लिए आपको क्या करना है, पहले ये डेल्टा निकालना है, ये Fs मान के. तो पहले डेल्टा एंड डेल्टा मैक्स, ऐसे दो चीजें अपने को निकालना है. तो सर ये हो गया आपका, ये समझ लो कि ये सर स्प्रिंग है. So he has given this D, then there is a load which is E, which is acting as 3531.3.6 न्यूटन इतना लोड एक्ट होता है.
ये जो है, ये जो कॉइल डायमीटर दिया हुआ है, अगर आप इसको कट करें तो ये आपको दिया है 15 मिलीमीटर का ये कॉइल है। तो सर इसमें क्या करना है, आपको पहले डिफ्लेक्शन निकालना है कि ये लोड के लिए उसको कितना डिफ्लेक्शन आता है, ओके, एंड देन शियर स्ट्रेस निकालना है। सो डिफ्लेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला है, 8 क्यूब जी डी रेस्ट टू पावर 4। सो डेल्टा इज इक्वल टू 8 P capital D cube divided by G D raised to power 4। तो सर इसमें वैल्यू पहले रख देते हैं, ये 8 है इंटू ये 10 हो गया, ये P आ गया आपका 3531, कितना दिया हुआ है 3.3531.6। ये P हो गया, डायमीटर कैपिटल D दिया हुआ है 0.125, इसका आपने कर दिया क्यूब डिवाइडेड बाय जी, जी आपका 73575 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³, यानी 1 किलो पास्कल है, तो ये मैंने चेंज कर दिया, इंटू डी, ये 15 मिलीमीटर दिया हुआ है, सो 15 इंटू 10⁻³ इसका होल रेज टू पावर 4 है, सॉरी। तो सर मुझे ये डेल्टा का वैल्यू निकाल के बताइएगा सर कि कितना आता है। इतना कम आता है सर डेल्टा का वैल्यू? नहीं सर, कुछ तो भी गड़बड़ तो नहीं है। 1 मिनट दादा, एट 10, हाँ 0.148 सर, ये 9 पॉइंट वाला थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगा, क्योंकि सर वो मीटर में बहुत ज्यादा हो जाएगा ना अथर्व। So 148 millimeter seems to be the logical answer. So 0.1481 ये हो गया आपका मीटर, so this comes out to be 148.1 मिलीमीटर। अथर्वा आपका वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, अच्छा नहीं आपने करेक्ट किया, ठीक है। तो ये आ गया सर, अभी इसके लिए shear स्ट्रेस निकालो Fs। So Fs is equal to G small d into delta, G small d delta divided by pi d square n। So pi d square n, तो G का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 73575 इंटू 10⁻⁶ मैं 6 कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, इंटू डी, डी कितना दिया हुआ है 15 इंटू 10⁻⁻3। चलो ये स्मॉल डी हो गया, डेल्टा अभी निकाला हुआ है आपने, इट इज 0.1481, ये मीटर में है, पाई का 3.14, कैपिटल डी इज गिवन एज 0.125, इसका स्क्वायर इंटू 10। सो सर डेल्टा कितना आया, सॉरी एफएस कितना आया सर, डी प्रिया नागावेणी, चलो एफएस कितना आएगा सर, थोड़ा सा देखिएगा। इसका सर कैलकुलेट करके बताइए। थ्री थ्री टू, अच्छा 332.29, 332
32.97 into 10 raised to power 6 बराबर है 10 raised to power 6 ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सर पास्कल करेक्ट है ना या करेक्ट चलो ठीक है नाउ अभी डेल्टा मैक्स निकालो सर आपको एफ मैक्स दिया हुआ है सो डेल्टा मैक्स इज इक्वल्स टू आपका डेल्टा मैक्स अभी कैसे निकालेंगे कौन सी इक्वेशन से निकालेंगे हाँ तो ये पाई डी स्क्वायर एन एफ मैक्स ओके सो ये भी अब हमने इक्वेशन लिखा था पाई कैपिटल डी स्क्वायर एन एफ एस मैक्स डिवाइडेड बाय जी इंटू डी सर प्रीवियस इक्वेशन देखो सर उसमें हमने ये लिखा हुआ है तो यहां से हम लोग अभी डेल्टा मैक्स निकालेंगे 3.14 कैपिटल डी कितना दिया हुआ है 125 तो 0.125 का स्क्वायर इनटू इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एफएस मैक्स कितना दिया हुआ है द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज 63765 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 क्योंकि सर मैंने ये किलो पास्कल को कन्वर्ट कर दिया तो सॉरी 10 रेज़ टू पावर 3 चाहिए सॉरी सर किलो यानी 10 रेज़ टू पावर 3 हो गया जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 73575 10 रेज़ टू पावर 3 किलो सॉरी 10 रेज़ टू पावर 6 यानी ये कंबाइन कर दिया किलो प्लस 10 रेज़ टू पावर 3 का डी इज 0.015 तो सर डेल्टा मैक्स इसका वैल्यू बताइए कितना आता है हाँ चलो 0.283 ये आएगा 283.6 चलो अंशुमन का वैल्यू लेते 0.28316 मीटर्स तो आएगा आपका 283.616 मिलीमीटर तो सर अभी क्लियरेंस के लिए क्या करेंगे तो क्लियरेंस ज्यादा से ज्यादा आपको कितना अलाउड है क्लियरेंस इज इक्वल्स टू ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 283.616 माइनस ये जो डिफ्लेक्शन है ये बिकॉज ये आपका एफ मैक्स से आ रहा है ना तो क्लियरेंस आएगा 148.1 इसको माइनस करने के बाद इट विल कम अराउंड कितना आता है सर ये 283 से 148 माइनस करो तो 225 पॉइंट समथिंग आएगा 135 ओके 135 आएगा 135.51 मिलीमीटर वन 125 आना चाहिए सर शायद अंशुमन 135 कैसे आया सर 145 आना चाहिए ना नहीं ठीक है हाँ ठीक है करेक्ट है so this is the maximum clearance which can be allowed so such kinds of problems are there are a lot of values in this but please understand that these problems are okay that we can design the spring for the suspension system in the vehicle usually this coil spring is used in the independent suspension system so now we will shift to the presentation I will just give you the brief understanding of what is the rigid axle suspension system and what is independent suspension system just 2 मिनट में मैं आपको एक स्लाइड बता देता हूं तो you will have some good understanding about it पहले इसके पहले अच्छा चलो ठीक है ये सर स्मॉल कर देता हूं स्लाइड शो
ये सर मैं और एक छोटा कर देता हूँ। तो सर हम लोगों ने ये सब कुछ बात की थी, ये भी स्प्रिंग की वेरिएबल, ये मैं सर आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Stabilizer bar and now the types of the suspension system. So please note that basically there are two types of suspension system. One is a rigid axle suspension system, and the other one is independent suspension system. These two things which are written in the boxes will give you the difference between these two suspension systems. So the figure itself is making you clear that non-independent or rigid suspension system has both the right and the left wheel attached to the same solid axle. That means this is the solid axle. So this and this is attached to the rigid solid axle. When one wheel hits the bump in the road, its upward movement causes a slight tilt of the other wheel. So this is the picture shown. Please note that this is, let us say that on above this there is a passenger carrier. Just imagine this. So if this is the, if you are riding on a vehicle which is fitted with the rigid axle suspension system, then it will be tilting like this. That means you will feel this particular rise by just by the tilt angle, whereas here it is the, when on the plain road it is vertical. Now this vertical axis will get slightly tilted like this. So that is the issue with the rigid axle suspension system. Now in independent suspension system, please understand that in independent suspension system allows one wheel to move up and down with minimal effect on the other. It is saying minimal effect. Okay, it is not that there is not going to be the effect on that, but for such a small thing, if you say that this is the passenger carrier here, then here also independent in spite of road irregularity, the vertical axis is not getting that much tilted. जैसे इसका vertical है तो ये जो है ये सर slight tilt होगा. तो this is the you can say advantage of the independent suspension system. You will find that this has the axis, they are having different tilting, whereas it has got the same kind of tilting like this. So it is, this is marked because this has lifted by this much amount. Let us say this is X, so it has also got lifted by the same amount X. So this is the difference between the rigid axle suspension system and the independent suspension system. Please note that nowadays all the vehicles, they are fitted with independent suspension system. So we will further move ahead. Now the rigid axle suspension system, this is the conceptual figure to make you understand when one wheel hits the bump or drops into the hole, both left and right wheels are moved. Because both the wheels are affected, the ride is often harsh and feels stiff. So usually in old vehicles, specifically in Jeeps, you will find such kind of you can say suspension system. Even in old trucks, this kind of suspension system was used. Now the independent suspension system, if you see, it is basically the complicated structure of the independent suspension system. So one has to be very careful as far as the designing of the suspension system is concerned. Now most vehicles today use a separate control arm type suspension for each front wheel, which allows for the movement of one front wheel without affecting the other front wheel. This type of suspension is called as the independent suspension system. So I have shown you the video as well on the rigid axle suspension system and independent suspension system. So please note that you see the complications which are there in the independent suspension system. So these things, they are attached to lower control arm bushing. These are attached to the system frame here. Okay, now we are going to see this clearly. Now this is going to show. Now you have got equal length upper and lower
control arm front suspension system. Now we will be talking mostly for the front suspension system, because nowadays in car the engine is fitted in the front side of the car, and therefore the suspension system has to be very strong, the front suspension system, compared to rear one, because on rear one the load which is coming, which is comparatively less, because the engine is mounted at the front. So CG of the vehicle is slightly shifted to the front of the vehicle. Now this type of front suspension system has coil spring with upper and lower control arm. Since wheel jounce means the vertical movement or rebounds movement of one front wheel does not directly affect the opposite front wheel. The control arm suspension is an independent suspension system. So these are the control arms. Okay, and here it is the blue color one is showing the tilted position. Many rear wheel drive have control arm front suspension system. Early front suspension system had equal length upper and lower control arm. On these early suspension systems, the bottom of the tire moved in and out with wheel jounce and rebound travel. This action is constantly changed the tire tread wear and cause tire scuffing and wear problem. That means this is the suspension system, though it is the independent suspension system, but as it highlighted that the earlier design, the equal control arm length, that means this length of the control arm from here and here. Yes. So this and this, it is going to be, this length is same. So this length, ये mouse का control नहीं है, so please excuse me for that. So this length, sorry, up to this, the length is going to same. The problem here, please try to understand, is the problem here is it is basically causing the tire wear or tire scuffing, they call it as, or the wear problems. Now to overcome this kind of problem, you can have the unequal kind of the short and long arm front suspension system. So the details of this suspension system we'll study in the next class. So right now we'll stop here. So right now we will stop here. Anybody is having any question, so please ask so that I can answer. So सर किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या सर, चैट बॉक्स में पूछिए. I will stop sharing. If you have any questions, please do ask. So if you have no question, then you can leave the meeting. Most probably, I am telling you, please understand.